ड्रीम बिग सीरीज का दूसरा सीजन आप तक हम पहुंचा रहे हैं कश्मीर लाइव से। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं, जो हमारा पहला सीजन रहा उसमें हमने कई सारे तलबा और तालिबात से बात की जो इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अब्रॉड पढ़ रहे हैं, किसी स्कॉलरशिप के तहत, फेलोशिप के तहत। और उन्होंने हम तक तफसीलात पहुंचा दी, मालूमात पहुंचा दी कि किस तरह से आप भी अप्लाई कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। आसान तो है नहीं, लेकिन इसको आसान बनाना पड़ता है। तो आज चूंकि हम आज से दूसरे इस सीजन की शुरुआत कर रहे हैं, ड्रीम बिग सीरीज का ये दूसरा सीजन चल रहा है, तो आज से इसकी शुरुआत है, पहला एपिसोड है। हमारे साथ इस वक्त तंजीला मुख्तार जुड़ चुकी है, जो इस वक्त पोस्ट डॉक कर रही है, सैन फ्रांसिस्को में है, और एक मखसूस टॉपिक के तहत वो इस वक्त रिसर्च कर रही है। बाकी मालूमात हम इन्हीं से लेंगे। तंजीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। Thank you so much. Thank you for inviting me, Iqra. It's a pleasure actually to be here. Yeah, and thank you for the audience as well. I'm glad, and honestly, it's also an honor. कई सालों के बाद मेरे ख्याल से आप आज कश्मीर के साथ जुड़ रही हैं। अपने parents के साथ I'm always in touch, but then of course like I am always a part of like ऐसे programs या कुछ ना कुछ with youngsters, because हम लोग कभी ना कभी कोशिश करते हैं कि जो youngsters apply करना चाहते हैं abroad for their PhD or master's programs or something, so we try to help them as well. So कहीं ना कहीं connection है, लेकिन of course I have not been able to visit home for almost 3 years now, जब से मैं US आई हूँ. So connection टूटा नहीं है completely, but then yeah, I have not been visited. You're right. I guess मेरे ख्याल से आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे जो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आपकी तरह इसी तरह से सैर करती रहें, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ती रहें। वो सफर कैसा रहा वो तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज इस बात से, सवाल से कि तंजीला, आपका ताल्लुक यहाँ कश्मीर में कहाँ से है और बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ हासिल की? हम लोग कश्मीर में श्रीनगर से हैं, और आई स्टडीड क्लास 10th तक मैलनसन गर्ल्स स्कूल में, और देन आई लेफ्ट कश्मीर 10th के बाद, और मैंने 11th-12th अपना दिल्ली NCR में पढ़ा है. Yeah, I mean उसके बाद I have been basically right after 10th I left. सिर्फ 10th तक मैंने कश्मीर में पढ़ा है. 10th तक आपने यहाँ कश्मीर में पढ़ा है मैलनसन स्कूल में, उसके बाद आप दिल्ली चली गई, तो हायर एजुकेशन के लिए फिर आप कहाँ चली गई? So then सबसे पहले मैंने 12th के बाद मैंने CBSE बोर्ड में पढ़ा, तो of course I mean JK बोर्ड was good, but CBSE बोर्ड was like a better opportunities, थोड़ा सा मिले या exposure मिला I would say, क्योंकि you know when you are so कश्मीर में थे, मैलनसन में भी थी, तो बहुत सारी opportunities थे, extra curricular activities थी, बहुत सारी certificates, बहुत सारे events, मतलब मैं participate किया था. तो जब मैं 10th में थी, मैं स्कूल की हेड गर्ल थी, तो स्कूल के हेड गर्ल मैलनसन में वो लोग बनते हैं जो कि एक्चुअली दे हैव टू बी गुड एट स्पोर्ट्स एज वेल एज एकेडमिक्स, सो दे कांट जस्ट बी लाइक एकेडमिक ओरिएंटेड. तो आई थिंक दैट ओवरऑल हेल्प्ड मी टू सिक्योर लाइक आगे जाके फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स इन लाइफ. बट व्हाई आई एम लाइक saying this, because जो students अभी हमें शायद देख भी रहे होंगे, they will be at different stages of their careers, of their lives, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे भी वो है, अभी जिस भी स्टेज पे हैं, दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू मेक एक्चुअली अ गुड कॉन्क्रीट CV फ्रॉम द बिगिनिंग. बिकॉज अगर वो अभी स्कूल में भी हैं, दे शुड पार्टिसिपेट नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, बट देन एकेडमिक्स में तो करते ही हैं हम, लाइक यू नो वी हैव टू गेट गुड स्कोर्स, और we should also try to do more curricular activities, like extracurricular activities, maybe debate competitions, like quiz competitions, some symposia like attend karna chahiye, like you know, so many things that you know when you're writing things in your CV, and whoever is going to see your CV, they should be able to see कि आपने बहुत कुछ किया है, write articles for the newspaper or something like that, make a study group with your friends and try to read more about like you know climate change, so many things. There's like you know you can basically expand in all dimensions you want. So I think that the reason I'm saying this is because that was the kind of thing that I did when I was in 11th and 12th, जो कि exposure even मैलनसन में भी था, लेकिन I got much more exposure when I was in 11th and 12th. And I was working in Times of India as a star correspondent when I was in class 11th. So मुझे कहीं ना मुझे writing का बहुत शौक था, but I was also, my parents are actually from media, but then
I mean, I eventually did not become somebody. Well. Eventually somebody did not like, I'm not somebody who like joined media, but then मेरी family का सबसे ज़्यादा like उनका connection ताल्लुक actually media से ही है. So I did write like Times of India के लिए, and then undergrad मैंने अपना Bangalore में किया, so I then did not stick to like North India. I went to Southern India, did my undergrad. That was because I didn't want to choose like any college. I wanted to go for the best. So that's also one thing that I would always tell anyone who asks me. I always tell people, always insist upon the best in your life. अगर आपको लगता है कि like there are better opportunities, कोई college है जिससे मतलब जिसके नाम आपके साथ tag लगने से like आपके आगे जाके future में opportunities better होंगी, you should always go for it. You should never think in घर से दूर हूँ ये वो, because this is your age when you should explore. So it's been kind of a journey that I've done, like studied in different places, but I have done it on my own. जो prestigious scholarship है वो आपको मिली स्विमिंग के नाम से, एक prestigious scholarship है जिसके तहत आप फिर मास्टर्स के लिए बाहर चली गई. हमें ये बताइएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमने किस स्कॉलरशिप का जिक्र किया और इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. पहली बात तो ये है कि मुझे चीवनिंग स्कॉलरशिप मिली. That was in 2010. I think almost like 700-800 people possibly had applied and 2 people got selected. So उस वक्त इतने सारे students select नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं. अच्छा. और another thing was कि मैंने Rhodes scholarship के लिए भी apply किया था, and that was my first scholarship जिसके लिए मैंने apply किया था. बिल्कुल कोई कोई preparation नहीं था, I would say कोई experience नहीं था. So I went through the interview Rhodes का, and I was grilled in the interview. Okay. And I didn't make it through. मैंने Commonwealth के लिए apply किया था. I went through the interview. तो मेरा profile was very good, but I couldn't clear the interview. So I am making this point before I tell you why I got the achievement. I think Rhodes के लिए और Commonwealth के लिए, when you go for an interview, sometimes you put up a show because you think that prepare karna hai, but then you want to like impress the other person across the table. Yes. Because so I tried to do that. I tried to impress the other person, the interviewers, and that didn't work. My credentials were great, but then when I did that, it didn't work. But when I went for Chevening, I was like, no, this is my last opportunity. I have to be myself. And that clicked. Because they somehow realized that being like, this person is somebody who has a vision for herself and she wants to be in research. She really loves her subject. And, if we fund her, it's going to be good. So so basically I was in my undergrad when I applied for Chevening, and I didn't even have a work experience. So I shouldn't say that because it's required. So because I had worked in Times of India during my school, they considered that as my work experience. So वो 1 साल का जितना भी था वो कुछ months का work experience side by side जो मैं Times of India के साथ कर रही थी, that became as a work experience. And मैंने immediately during my undergrad ही final semester में अपने Chevening के लिए apply किया था. So we were supposed to write a couple of essays, and I just poured my heart out because I liked writing. I poured my heart out. My grades were amazing. I was one of the top students in my college. Okay. I think it clicked, and the interview was great because I was myself. So I think it's a process, You have to be honest. That's what I think it's important. I know that we all have been through conflict, but then, when you pour the actual problems and what you feel out on paper, people actually know that जो आपका पढ़ रहे होते हैं, लोग assess कर रहे होते हैं आपका application, they will actually know that कौन सा बंदा honest है और कौन सा नहीं है. And that is very important. So you have to really gauge, कि किस question में किस तरह से मुझे answer करना है. And that is very important. And somehow, मुझे नहीं पता मेरे पास उतनी understanding थी in my undergrad, but for sure, I think I was so driven to go abroad and do my research and basically not do civil services because that's what my parents expected of me. So I just poured my heart out on papers and just say that, okay, and I just said that I somehow need this fellowship to go abroad. आपसे अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया पेरेंट्स का, और आपने ये कहा कि पेरेंट्स आपके चाहते थे कि आप सिविल सर्विसेज की ओर जाएं, लेकिन आपने साइंस सब्जेक्ट का इंतखाब कर लिया. क्या जहन में कुछ और भी था इसके अलावा या साइंस ही था?
नहीं, पहले से मेरे को यही पता था कि आई वुड डू साइंस. सो माय पेरेंट्स इनिशियली थॉट कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो दे वांटेड मी टू बिकम अ क्लिनिशियन जब मैं 11th 12th में थी. और उसके बाद जब शाह फैसल ने आईएएस कर लिया तो फिर सबको लगा कि आईएएस करना है. प्रेशर और पड़ा। तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि लाइक दे न्यू दैट आई हैड द एप्टीट्यूड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एम्पैथेटिक हूँ. सो उनको इसीलिए लगता है कि me being a doctor or me being like a civil servant would help people because I'm very helpful. So I reach out to people. I I really help. So my mom especially is like, she's very kind. She wanted me to become like also like she was also help kind of helping my dad, saying that nahi isko bolo, she'll become like a civil servant. And that way so शायद मैं लोगों को ज्यादा help कर सकती हूँ than the way I'm doing right now. उनको लगता है because they are not able to assess that way कि मतलब कितना research can help people. It's a different ball game altogether, right? So they wanted me. Also another thing, कश्मीरी parents का ये होता है कि बच्चों को घर के पास रखना है, तो कहीं जाने नहीं देना, बाहर नहीं जाने देना. Even if I was studying outside, undergrad में I was one of I was a topper in my college. They still wanted me to not do masters. They wanted me to come back and study for civil services, and there were arguments at home that ki civil services ही करना है. And when I went for masters, जो कि scholarship अगर मुझे नहीं मिली होती, शायद मैं masters नहीं कर पाती. So luckily I got the scholarship and I went to England. So when I came back from England, I remember ये dialogue फिर से हुआ घर पे कि मुझे civil services करना चाहिए. I had done my master's in stem cell and regenerative medicine. It is such a narrow field, और बहुत ही growing field था. And my parents were still like, civil services kar lo. I was like, what is going on? So they were like hell bent on ki nahi civil services hi karana hai. So it can be like a big effect, but then I think in a way I'm very headstrong. So mere dad और मेरा तो is the clash of the titans. So he's very headstrong, but I'm also very headstrong. So he knows that he's taught me well. So kabhi matlab mostly I win the arguments because he's the one who has taught me. So I kind of win over him then. So that's what happened eventually. One more thing that I would like to know, after your masters, what actually, kind of that thing triggered you to, when you said that you need not to knock it off, you have to go for research. What was that particular thing that triggered? So no, research was something that I always wanted to do. So that is not something that just came during masters or something. So it was a step. So it's a plan. So that's what is important. So, these are the kind of things. So if somebody is interested in research, it's not a kind of thing कि आप एक दिन रात को सो के उठो and then you'll be like, oh, अब मैं research करूंगी, अब मैं PhD करूंगी. It's not that kind of a thing. Because अगर आपको लगेगा कि अब मैं PhD करूंगी, आपको 2 दिन बाद लगेगा ये मैंने क्या कर लिया. So that's also something. This is something that needs a lot of drive and passion. So I know myself that I'm totally passionate about research. I mean, I understand that people can change their plans, which is fine. But then एक कंसिस्टेंसी चाहिए. कहते हैं ना कि क्रिकेट में कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन फिर कभी कभी वो बोल्ड हो जाता है पिच पे जाके बैट्समैन. इसमें भी यही होता है. आपके अगर आप 10 एक्सपेरिमेंट्स करो तो आपके 8 फेल हो जाते हैं. तो उस वक्त यू कैन लूज योर माइंड. और उस वक्त अगर आपके पास वो पैशन नहीं है, यू विल एक्चुअली लूज योर माइंड, यू विल लूज दैट इंटरेस्ट. एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि व्हेन थिंग्स डोंट वर्क एक्सपेरिमेंट वाइज, दे लूज देयर इंटरेस्ट इन देयर सब्जेक्ट और इन पर्टिकुलरली इन रिसर्च. But that's what you need to avoid if you're पहले से ही passionate. Because जब आपका वो एक result आता है जिसके लिए आप 3 महीने से काम कर रहे हो, वो जो adrenaline rush आपके अंदर आता है कि ये this is the discovery you have made. You're contributing this to the field. Nobody knows this. This is novel. So वो जो हमारी वजह से अब बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, so और उन पे burden करेंगे हम लोग, तो उसका अलग मजा होता है. So that's what happens. So, you get very happy when you actually discover something which is novel. But there will be many failures in research. And I think usse bhi bachne ke liye you have to be kind of pehle se headstrong. Yeah. Okay. हम ये आपसे जानना चाहेंगे, PhD के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा और आपकी रिसर्च का थीम क्या था? So जैसे मैंने मास्टर्स किया इंग्लैंड में, शेफील्ड में. जिन प्रोफेसर के साथ मैंने मास्टर्स अपना किया अचीवनिंग स्कॉलरशिप के टाइम पे, मैंने वहां पे क्या होता है कि मास्टर्स के टाइम पे यू हैव टू डू अ डिसर्टेशन एज वेल. सो इट्स लाइक यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट फॉर 9 months इफ योर मास्टर्स 1 year मास्टर्स इन इंग्लैंड. तो उस 9 months के टाइम पे आई वाज वर्किंग इन अ प्रोफेसर्स लैब, एंड वो प्रोफेसर स्विट्जरलैंड मूव हो गए.
और उन्होंने मुझे एक PhD पोजीशन ऑफर कर लिया. सो आई ज्वाइन एक्चुअली हिज लैब. अब आपको रैंडमली प्रोफेसर्स ऐसे ऑफर नहीं करेंगे PhD पोजीशंस, unless you actually prove your worth, right? You have to really work hard. So जब मैं एक्चुअली मास्टर्स में थी, मुझे एक प्रोजेक्ट करना था, मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए. तो इवन एज अ मास्टर स्टूडेंट आई वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग. मैं सुबह आई वुडंट से और सपोर्ट कि रात के 2 बजे तक काम करो, but that's what I was actually doing. There were days when I was actually working until 2 a.m. in the night. और मुझे ये भी याद है कि मैं सुबह 6 बजे घर गई and फिर से 7:30 बजे वापस लैब आई. तो I worked extremely hard because I wanted to accomplish some things. And that's what happened after like couple of months. जब मुझे इंग्लैंड जाना था, मतलब सॉरी इंग्लैंड से वापस आना था, उसके पहले मुझे वो PhD पोजीशन मिल गया. My professor offered me a PhD position because this is how it works. Your professors will realize that we have trained this person is actually trained nicely in the techniques we have taught this person. वो एक नए इंसान को नहीं करना चाहेंगे अब ट्रेन, ऑलरेडी इस बंदे को ट्रेन किया है, इसी को वो PhD ऑफर करेंगे. एंड आई वांटेड दैट टू हैपन. सो एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ अ प्लान. सो ऐसा कुछ नहीं था कि अचानक से करना है या हो जाएगा. ये एटीट्यूड नहीं था पहले से प्लान था कि अंडरग्रेड करना है, मास्टर्स करना है, फिर PhD करना है, PhD के बाद पोस्ट डॉक करना है, और कहाँ करना है, कैसे करना है, किस प्रोफेसर करना है. वंस यू गेट इन दिस फील्ड यू रियलाइज कि अगर आप पैशनेट हो, यू विल ऑलवेज मेक अ प्लान लाइक दिस. आप PhD के लिए फिर कहाँ गई और थीम क्या था? So PhD फिर Switzerland, actually I was telling you, oh sorry, that I missed. So that professor like moved to Switzerland. So I basically joined his lab in Switzerland. And I worked on understanding the development of the mammalian forebrain. So basically what we were trying to understand is कि जो brain होता है, how is it formed? So it's actually formed in using like एक बहुत ही thin layer structure होता है cells का, और उन thin layer से जब development के दौरान, because I'm a developmental biologist, development के दौरान उस thin layer से एक 3-dimensional structure बनता है हमारे brain का. और वो 3-dimensional structure actually 6-layered structure होता है, और उन 6 layers में न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट तरह के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. और ये जो 6 layers होते हैं ये सीक्वेंशियली बनते हैं. पहले डीप लेयर्स बनते हैं, फिर अपर लेयर्स बनते हैं. तो मेरे PhD के दौरान हम लोग कोशिश कर रहे थे टू अंडरस्टैंड कि ब्रेन में जो सेल्स हैं वो किस किस तरह की होती हैं. जैसे जो स्टेम सेल्स होती हैं ब्रेन की, जिनसे सारे न्यूरॉन्स बनते हैं, वो हर दिन कैसे चेंज होती हैं इन देयर प्रॉपर्टीज, इन देयर फंक्शंस. और जो स्टेम सेल से और सेल्स बनती हैं, उनके प्रोजेनाइटर्स, वो कैसे चेंज होती है ओवर टाइम. सो वी वर ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोफाइल दोज सेल्स ड्यूरिंग माय PhD. और बेसिकली क्या सिग्नलिंग कैसे कम्युनिकेट करते हैं सेल्स. सो वी वर इंटरेस्टेड इन दैट. सो दैट्स व्हाट आई हैव वर्कड ऑन in a mouse model system. So जैसे हर फील्ड में you will have like different model systems. जैसे कभी कुछ लोग Drosophila flies पे काम करते हैं, कुछ worms पे. So during my PhD I worked on a mouse system. अभी I have like during my postdoc I'm working on the human system. So जैसे humans में हम लोग जैसे iPSC cells होती है, induced pluripotent cells जिनको कहते हैं, you can make cerebral organoids out of them. So जैसे you can think that कोई patient है and that patient has Parkinson's disease. So we know that एक particular type of neuron उनमें कम हो रहे हैं. So what we can do is उनकी skin cells या उनकी cells लेके we can reprogram those cells and change them into stem cells. उन stem cells को they are called as induced pluripotent cells. उन stem cells को फिर से हम convert करके, program करके we can actually change them into these neurons जो कि Parkinson's patient में कम हो रहे हैं. So then we can graft those cells inside the patient's brain and it can maybe alleviate the symptoms जो कि patients में है. So this kind of like therapy can help. So though I'm not at the therapy level, like the therapeutic intervention, but I'm at the basic biology, understanding that ये कैसे हो रही हैं चीजें, like how to like work with the iPSCs, changing them into neurons, those kind of questions. So that's what I'm working on. अभी हम रिसर्च के किस स्टेज पे हैं? like अभी कितना किया और कितना बाकी है? So that's a good question. So different labs across the world, like कुछ हैं जो industry वगैरह है जो कि therapy वगैरह मतलब they are starting. So there are some clinical trials जो कि लोग कर रहे हैं for some of the like there is one company for example here and there's one more
like on East Coast. They are doing some clinical trials जिसमें they are with respect to the brain at least, and they are going to graft जो कि neurons हैं cells, they're going to graft them in the patient brains and then they wait. So जैसे यहाँ पे जो एक company है, they just grafted some neurons in the patient brains, patient number 1. So we are really at the beginning of this with respect to the brain, at least with respect to some of the neurological disease. And फिर वेट करना है कि कैसे ये सेल्स इंटीग्रेट होंगी सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कुछ ट्यूमर्स तो नहीं होंगे, ये प्रॉपर्ली इंटीग्रेट होंगी, क्या फंक्शनल होंगी. सो जैसे एपिलेप्सी का पेशेंट है, उसको सीजर्स वगैरह होते हैं, तो क्या उसके सीजर्स कम होंगे, नहीं होंगे. सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो देन दे हैव टू बी मॉनिटर्ड बिकॉज व्हेनेवर यू गो इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स, बी इट लाइक थेरेपी के लिए या सेल बेस्ड थेरेपीज, और बी इट फॉर बिग फार्मा एज वेल, सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन जब भी इसका ये बेहतर आउटकम आएगा तो मेडिकल साइंस में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चेंज हो सकती है ये. Yeah, it's going to be like a revolution, of course. Like, you know, once this happens, because you have to imagine that agar neurological disease hai, which are like not treated, and dheere dheere aapka brain gets like kind of, there's a lot of cell wasting that happens, like dementia mein, like people lose their cells. But somehow if you can actually now graft these cells, the different types of cells jo ki lose ho rahe hain, you can graft them back in the brain, maybe you can alleviate their symptoms as well. But it's going to require a lot more testing, and then you need to check, like, you know, kitna, I don't know whether all the patients are going to respond the same way. It could mean that, you know, different factors can play a role. So bahut sara testing will be required. इन बिटवीन तंजिला मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि आप ये बता रही थी ना रिसर्च के हवाले से, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन एक क्लिक हुआ कि क्या अभी भी पेरेंट्स बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लिए वापस आ जाओ? So not now, लेकिन मेरे PhD के दौरान when I was having a difficult time, जैसे कभी कोई experiment काम नहीं करता था, तो that time my parents would say, तुम्हें बोला था civil services करने के लिए, IAS बनने के लिए. तो my dad used to say that. So I think that happened for like 1 or 2 years. अब नहीं बोलते, because now they know that कि अब शायद you know, they are like अब निकल गई है लड़की हाथ से. So I think it's like too difficult. No, they know that I'm like driven by research and everything, because, you know, in the end I always tell people they should do what makes them happy, and I cannot be in a field, the kind of person I am, I cannot be in a field जिसमें कि मुझे खुशी ना मिले, सुबह जाके उठ के to go to work and then I'm unhappy there. So I'm not that kind of a person, because I would like to do something that I really love and I'm like, you know, happy doing. Okay. अब आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, वो कई सारे स्टूडेंट जो अभी हमें देख रहे होंगे, ट्विनिंग स्कॉलरशिप के बाद आप रिसर्च के लिए गई, आप स्विट्जरलैंड गई, इंग्लैंड वगैरह, ये सारी जगह, सैन फ्रांसिस्को में अभी आप हैं, पोस्ट डॉक कर रही हैं. अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो एक स्टूडेंट जो मेरे ख्याल से दिन में कई सारे उसके ख्वाब बदलते हैं, कभी इन्फ्लुएंस्ड, यू नो, माहौल का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, लाइक उस बंदे ने ये किया, मुझे भी वहीं जाना है, लेकिन अपने जहन में ख्वाब कुछ और रखे होते हैं, फिर बदलने पड़ते हैं. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think पहली बात तो okay, maybe I should give example like अपने टाइम से. तो मेरे cousins या मेरी family में like nobody was actually pursuing science. तो शायद that was also one thing that worked in my favor, क्योंकि मुझे कोई exposure ही नहीं था बिल्कुल भी when I went outside. तो मैंने किसी से बात ही नहीं की कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. शायद उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगी कि शायद ना देखे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, because it doesn't help. You know, you have to follow your own mind. क्योंकि जो लोग कर रहे हैं, it's not going to make you happy eventually. If you want to do like engineering, you follow engineering. If you find your happiness there, you go for it. If you want to become a doctor and clinician, you go for it. If you want to actually become a researcher, then you find ways and do research. You know, you then, अगर पता है पूरा research ही करना है, reach out to a person जो पता है कि legit है, ये research कर रहा है, इसी को बात, मतलब इससे बात करनी है. Don't go like 100 different ways. I'm sure there are people who are not able to decide as well कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, but at the back of their mind उनका एक interest होता है. And I know that there are like many societal pressures and parents का pressure होता है, वो हर एक पे होता है, मुझ पे भी था. और I'm not even from like this generation. I feel that I'm like from the older generation altogether.
So मेरे पे तो I think उस time तो ज्यादा था pressure हम पे, like you know we were expected to become like Shah Faisal. So हम तो सब IAS officers बनने चाहिए थे मेरे सारे batchmates या doctors or engineers. So I think we all did pretty well for, like you know, we followed our dreams, and I know a bunch of my friends and they're doing whatever. I'm sure that if they follow their dreams, they kind of narrow down their vision, and I think make themselves the first priority. Like, you know, write notes. I always tell youngsters, make Excel sheets, write point number 1, this, and then make a route. कि क्या क्या follow करना है, what are the avenues, point 2, organize themselves. Because that's really important. ऐसे जब ये chaos में इंसान रहता है, you're not able to follow like a clear line of thought. You only get clarity when you're organized. So true that. That's why we are here right now. और हम लोग ये point discuss कर रहे हैं. Initial stage आपका रहा, initial step हम कह सकते हैं शिवनिंग स्कॉलरशिप, जब आपको वह हासिल हुई. कई सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त जानना चाहेंगे शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, कौन से ऐसे मरहले जिनसे उनको गुजरना है, क्या प्रोसीजर रहता है. So achieving के लिए, I think you really need to have a good profile. I think आजकल people have they do a lot of things. They work in NGOs. उनका CV तो strong होना ही चाहिए, but then I think they also need like a work experience or something like that. That's why I'm saying that there must be people watching us who are of different ages and who are different stages in their lives and careers. अगर आप स्कूल में हो, आप मिडिल स्कूल में हो, this is your time to actually gather certificates and gather experience, like do things, extracurricular activities, because you want to show them that you've done so much. I remember when I sent the evening application, I sent them 80 certificates. I sent them 80 certificates because I had 80 certificates, you know, so I had done so much stuff. I had done so many things. I was doing Urdu essay competitions, English writing competitions. I was working in Times of India. I was a captain of the basketball team, Kho team, throwball team. I was the head girl class 10th mein. I was the head girl class 12th mein. I was the house captain class 11th mein. I was like, you know, I was 11th, 12th outside. I told you I was in Delhi NCR. I was in Greater Noida. मैंने रंगोली competition में भी हम लोग first time. Like, I didn't even know how to make a rangoli. So I came first in that because it's art, you know, you can do whatever. So the aim was basically to be the best in everything you are doing. You know, that was the attitude. And I think that is required somewhere because kahin na kahin, Chevening is looking for leaders. So you need those leadership skills. And you have to prepare wherever you are, whatever stage you're at in life. And that's very important, yeah. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? फॉर इंस्टेंस ये सारे स्किल्स किसी एक बंदे में, किसी एक स्टूडेंट में उसने एक्वायर कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है उसका? क्या ये वाले स्किल्स इनफ है? Say it again, क्या ये skills enough है? What was your last sentence? हाँ, यही कि क्या इस तरह की जो स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज एक बंदे में हो, क्या वो इनफ है इसके लिए? I mean, it also depends on the competition, right? I'm sure that there will always be people who are at par with you or they're better than you. Then there will be an application, you know. So आपके पास skills हैं लेकिन आपको लिखना नहीं आ रहा है essays में. आप बिल्कुल basically you're not able to put your heart out on the paper. आपने इतना सब कुछ किया है लाइफ में लेकिन आप essay में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख पा रहे हो. So maybe that is the point when you want to seek help from someone who's actually been through the process or who's a Chevening scholar and who has experience. And I'm sure there are many people who are willing to help there. Maybe agar Chevening scholars nahi hai, Kashmir has road scholars. You know, maybe like, you know, you can reach out to people and then ask, okay, I have such a stellar CV. How should I actually write things? Application mein to last year I checked actually 3-4 logon ki Chevening applications. You wouldn't believe somebody from Karnataka, a random nobody, I don't even know this person, she reached out to me and I checked her application. Okay. Which is fine because she found me on Facebook or somewhere on LinkedIn, reached out to me, told me if I could help her, and I helped her with her essays. And I think I also helped some Kashmiris. But the point is that, you know, you can always reach out to people who have already been through this. And we are more than happy to help Kashmiris. Mm-hmm. So ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि
क्या पता वो कई सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि आपसे जुड़ जाएं और आप तक वो जो भी ऐसे वगैरह जो भी एप्लीकेशन उन्होंने लिखी हो या सोचा हो वो आपको दिखाएं, तो उसके लिए क्या करें, कैसे आप तक पहुंचे? They can always write to me if on Facebook, and if they can give your reference, it's fine. There are many students who write to me, like write a text to me. Please do not write like hi, how are you, because then it's like unclear कि आप क्या चाहते हो मुझसे. If you have questions, write the entire question, because that's something I really encourage people, especially बहुत सारी queries आते हैं with respect to research. Actually, you know, they need help, people need help with their statement of purpose, they need help with their CVs, with everything, with their cover letters when they want to send it to their professors. And you wouldn't believe, when you help people and then उनका कहीं पे admission हो जाता है, they get to secure a position, वो interview में अच्छा करते हैं, it is such a great feeling for us, because we feel that we have actually touched lives. So that happened to me like this year with a couple of people I've helped, and it was amazing. So it's a great feeling. It's not that we are not willing to help. Of course, it depends on our bandwidth, but I always try to find time to help people, and it's really, really nice. It makes me feel very nice when they do well then. थैंक यू सो मच तंजिला. तंजिल, हमें ये भी बताइएगा साथ में कि 3 साल तो अब हो गए, 3 साल का बहुत बड़ा गैप, आप अभी बाहर ही हैं. कश्मीर आप आने का कोई इरादा है? So Kashmir ka the issue is I'm not able to travel because of the visa issues, because US embassy was काफी time तक COVID की वजह से closed, and then they don't have any appointments, so I have to sort that out. कि appointments लेके, because we are on a certain visa, exchange visitor visa होता है when we are working here as postdocs, so you have to get your visa stamped if you want to come back to the country. So as soon as I get the visa appointment, I'll be able to come and visit. So yeah, maybe, I don't know. Nothing set in stone. इंशाल्लाह आपसे जरूर यहाँ भी मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच तंजिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें उम्मीद है कि आज का जो ये हमारा सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने देखा होगा, यंग जनरेशन है जिन्होंने देखा होगा, उनके लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Yeah, thank you for inviting me. See you.